Okay. Basic, what is the basic understanding of active and passive voice? First tell me. What do you understand by an active voice and what do you understand by a passive voice? Can anybody tell me? What's the basic understanding? What do you think active voice means and what do you think passive voice means? Any idea? आप तो पहले ना करें. Okay. Basic sentence, just say I'll give an example of active. Okay, I'm just writing A. You understand? It's an active sentence. Sita loves Savitri. Okay. Sita loves Savitri. Clear handwriting? Nahi, I think. Wait a minute. Okay. So the sentence is Sita loves Savitri. The sentence is very clear. आपको इसमें कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स तो नहीं दिख रहा है. इट्स जस्ट अ सिंपल सेंटेंस. सीता लव्स सावित्री. ठीक है. वहीं पे इफ आई एम राइटिंग इट इन पैसिव, सावित्री is loved by Sita. Okay? Savitri is loved by Sita. Passive voice means twisting the sentence. Okay? पैसिव में व्हाट हैपेंस इज कि आप उसी सेम सेंटेंस को आप घुमाकर बोल रहे हो. जैसे कि अगर आपने एक हिंदी एक्शन आपने देखा होगा, इट्स आइदर ईटिंग लाइक दिस और ईटिंग लाइक दिस, टेकिंग दिस हैंड बिहाइंड एंड ईटिंग लाइक दिस. सो active and passive is something like that. Active and passive, why I'm doing this chapter is because आपका अभी जब आपका essay writing आएगा या letter writing आएगा, the examiner or the board might demand for short answers or short sentences. सडनली अगर आपको बोले कि आपको कोई टॉपिक आपको बोलना है बट यू हैव टू डिस्क्राइब इट इन अ वेरी शॉर्ट मैनर, जैसे कि आपको 1 मिनट का स्पीकिंग टाइम मिला है और मे बी 1.5 मिनट, उस टाइम पर इट डिपेंड्स हाउ मच नॉलेज यू हैव ऑन द टॉपिक ऑफ एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस मीन्स कितना शॉर्ट में आप एक सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, कोई भी चीज को. एंड पैसिव मीन्स इलोंगेटिंग इट, उसको आप कितना लॉन्ग कर सकते हैं, खींच के लंबा कर सकते हैं. एंड समटाइम्स आई थिंक स्टूडेंट्स हैव यूज्ड इट इन ऐसे राइटिंग, इजंट इट? जब आपको कवर अप करना होता है, ओके 350 वर्ड्स है, 400 वर्ड्स है, आपको कवर अप करना है, सो व्हाट यू डू इज यू इलोंगेट योर सेंटेंसेस, इजंट इट? ताकि आपका वर्ड्स कवर हो जाए. So this is the basic understanding of active and passive voice. Okay, active means to the point and passive means elongating the topic. Okay, कोई doubt है इस portion में? Can I ask one sentence? If आप लोग समझ पाए कि नहीं, I'll just give the question in active. This is your question. The mason is building wall. Okay. Okay, यहाँ पर add होगा actually. Sorry. So this is the question. The mason is building the wall. This is an active. आप who can tell me इसका passive क्या होगा? Go ahead. Okay, built by the mason. That is good. All right. So इतना सा basic understanding you all have got, right?
इसका पैसिव इज, आपने क्या आंसर कहा? एग्जैक्टली, एंड व्हाट डू यू थिंक इज रॉन्ग इन हियर? एक्टिव में सेंटेंस को आप पढ़िए, द मेसन इज बिल्डिंग, बीइंग, एग्जैक्टली। सो ये होता है द बेसिक। अगर हम यहाँ पर बोलते कि द मेसन has built the wall. So the wall has been built by the mason. But when I'm saying the mason is building, notice the tense of the sentence. The tense matters a lot. Tense क्या है? What's the tense? Present and yes. Up loudly बोलिए ना. Why are you getting nervous? Yes, present continuous is building. Okay? So the mason is building. So the wall is being built. Being built. Okay? शिवांश, आपको समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग कंफ्यूज्ड? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। इट्स अ ट्रिकी वन एंड आई बिलीव आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। हु डिड दिस? ये एक्टिव में, व्हाट शुड बी द पैसिव वॉइस? ट्राई करिए ना। यू अंडरस्टूड द बेसिक डिफरेंस ना बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव, राइट? सो अकॉर्डिंग टू यू क्या इसको इसको कैसे हम लोग ट्विस्ट कर सकते हैं? आई कम टू यू, वेट, गिव इट अ ट्राई, थिंक, कम ऑन। You're a smart boy, right? You're saying you're a dumb person. आप अपने आप को डम बोल रहे हैं, क्यों? गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ ट्राई। हु डिड दिस? ये किसने किया? ओके, एक बेसिक थिंग आई टेल यू ऑल। कभी इन इंग्लिश, बट आई एम नॉट सेइंग कि ये ऑल द टाइम होना चाहिए, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, इट्स जस्ट अ हेल्प, ओके? कभी if in English you're not understanding a sentence, try to read it word by word and try to convert it in Hindi or maybe any of your preferable language. ठीक है? आप उसको कन्वर्ट करने का कोशिश किए, बट आई एम नॉट सेइंग कि ये ऑल द टाइम होना चाहिए, बिकॉज ऑल द टाइम हिंदी एंड इंग्लिश आर नॉट अलाइक। ओके, सेंटेंस का मीनिंग या पैटर्न थोड़ा सा बदल जाता है व्हेन यू कन्वर्टिंग फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। ओके, बट इफ एनी टाइम इफ द क्वेश्चन इज लाइक बहुत डिफिकल्ट है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, ट्राई टू कन्वर्ट इट इन हिंदी। ओके, सो यहाँ पे आई एम टेलिंग यू, शिवांश, हु डिड दिस? ये किसने किया? So, इसको आपको क्या लगता है कि होना चाहिए पैसिव में? अच्छा, पैसिव का, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट्स द कीवर्ड इन पैसिव सेंटेंस? इन एनी पैसिव सेंटेंस कीवर्ड कौन सा होता है? पैसिव मीन्स यूर elongating इट, राइट? तो कीवर्ड ऐसा कौन सा होता है जो आपको लगता है कि हर एक मोस्ट ऑफ द 99% पैसिव सेंटेंसेस में ये वर्ड यूज होता है? हाँ से, हाँ हाँ, करेक्ट, वेरी गुड, बाय। ये मोस्ट ऑफ द सेंटेंस में यूज होता है। कोई भी सेंटेंस हम बोल रहे हैं, सीता, सावित्री इज लव्ड बाय सीता, द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मेसन। सो ये सीइंग बाय बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। बाय इज द कीवर्ड, ये रिमेंबर, ओके? आपको एक हिंट मैंने और दे दिया, अब आप ट्राई कीजिए। यू हैव द आंसर? ओके, गो अहेड। आई एम सॉरी, आपको लगता है कंस्ट्रक्शन कैसा है इसका, सेंटेंस का, जो जो आंसर आपने कहा, व्हाट्स लाइक, इज द कंस्ट्रक्शन करेक्ट? आपको, अगर आप, मैं आपको बोलूं कि आप इसको हिंदी में कन्वर्ट कीजिए, तो आपको क्या लग रहा है, ये सेंटेंस करेक्ट है जो आपने बोला? नहीं ना? सो व्हेन द क्वेश्चन इज ये किसने किया, इसको ट्राई कीजिए हिंदी में उल्टा करके बोलने का। डोंट सेंटेंस को ही उल्टा मत कर दीजिए, बट ट्राई इट एक बार, जस्ट, यस, यू हैव द आंसर, ओके, से, बाय whom? Okay, by whom was this done?
इज इट करेक्ट? व्हाई नॉट? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए इसका आंसर से? नहीं, यू हैव टू फ्रेम योर आंसर इन द फॉर्मेट ऑफ अ क्वेश्चन, क्योंकि आपका क्वेश्चन इज ऑलरेडी अ क्वेश्चन, राइट? Who did this? So when you're asking somebody, so do you say the normal words first, like this आप पहले बोल देते हो? हम लोग क्या बोलते हैं? Is this or are these? है ना? We say this. हम लोग नहीं बोलते these are और this is. हम लोग ऐसे तो नहीं बोलते, right? When we are asking a question, तो उसमें is और are हमारा पहले आता है. Whenever there's a question. So who did this? By whom was this done? She's right. By whom was this done? Whom, who का opposite रहता है whom. Remember this. And always remember, ये silly mistake बहुत students करते हैं. You write the answer and you put a full stop. There has to be a question mark because your question is a question. Okay, so ये गलती मत कीजिएगा. So Shivansh, did you understand? अभी आपको समझ में आया क्या difference है? By whom? Who का opposite when we are writing in passive voice, तो it can be whom, it can be whose. Okay? ये portion सबने copy कर ली? Shall I raise it? Okay. ये बहुत long time ले लेगा. से erase भी नहीं हो रहा. So just write this. Keyword क्या क्या है? Keyword of passive. Keyword of passive voice. By. Okay? And what is the opposite of who in passive voice? As in, हम लोग who को जब convert कर रहे हैं from active to passive, what are we writing? Whom, whose. Okay? Is it clear? Let's try one more sentence. Active and passive voice में it just doesn't mean कि you're noticing what the sentence is, like कि Savitri loves Sita or Sita loves Savitri, to the point. See the tense. If I'm saying Sita loves Savitri, what's the tense over here? Present. Yes. ठीक है. और जब हम लोग ने मेसन वाला सेंटेंस किया, what was it? Present continuous. So tense is also an important chapter. In grammar, tense and active passive voice have a lot of influence on all the other chapters you do. क्योंकि first of all वो sentence पे depend कर रहा है how short and long you're making the sentence, and secondly how well aware you are of the tense of the sentence. Okay? After we complete this chapter, हम लोग का main chapter will be tense. Okay? So
This time I'll give it in passive and I want it to be converted in active. Why was such a letter written by your brother? Okay, this is in passive. I want the active tense, the active voice of this. इस बार आप जाएंगी साची. I want you to try. सबने थोड़ा थोड़ा ट्राई किया है, but I couldn't hear your voice at all. What do you think it will be? सबसे पहले, first of all, can you tell me what's the tense of the sentence? Past, yes. Normal past, okay? Not past continuous or past perfect, just simple past, okay? And okay, remember this when you're saying आप कोई tense का sorry एक sentence का अगर आप tense बता रहे हैं, always say uh, if it is normal past or present or future, say simple past, simple present, simple future. This is easier to understand. That means the sentence is in simple past. Okay? So now tell me what will be the active voice of this. Who knows the answer, Abhi? I want to know first. किसको आंसर आता है ऑलरेडी इसका? Why was such a letter written by your brother? ऐसा लेटर आपके भाई ने क्यों लिखा? Convert it. You want to try? अपने हाथ ऊपर के ओके गिव इट अ ट्राई. ट्राई. हाँ हाँ हाँ. हाँ, सच अ लेटर वॉज ये तो ऑलरेडी है, पैसिव में ही है. बाय को ऑलवेज रिमेंबर व्हेन अ सेंटेंस इज इन पैसिव देयर इज अ बाय. हम लोग अभी समझे कि बाय इज द कीवर्ड ऑफ पैसिव सेंटेंस. यस, सो बाय को हम लोग को रिमूव करना है. दैट विल बी आवर पर्सपेक्टिव. ओके ओके, 1 minute से. करेक्ट, यस. Why did your brother write such a letter? Sorry. Okay. Why did your brother write such a letter? So what did she do? She removed the by from the sentence. Yes, हम लोग का जभी भी when we are doing a passive voice, our main idea will be removing the keyword by. Okay? Because by is the keyword of passive sentence, of a passive voice. When the by is removed, then the sentence becomes active. Okay? I'll give you some examples. You can write it down. Okay? Like words that are passive and words that are active. Okay? Active, passive. कोई भी sentence in active can be very small and to the point. So, if we are talking in the tense of simple present, simple present. Okay? Simple present में there are words such as I take, she takes, he takes. So, take or
टेक्स. ओके. और पैसिव में इट विल बिकम am taken, is taken, or are taken. What happens in passive is words get added. Active means words are reduced. Passive means words get added. ठीक है. बेसिक ये आइडिया ऑलवेज क्लियर रखिएगा. Now if I say a word in simple past, आप लोग मेरे को इसका पैसिव वर्ड बताइएगा. Am taking. I'm sorry. Am taking. Okay. Am taking. For example, I am taking. सॉरी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है ये. सो आई एम टेकिंग. सो व्हाट विल बी द पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस? आई एम टेकिंग. यस. हाँ. इज टेकिंग तो वो ऑलरेडी है. आई एम टेकिंग और शी इज टेकिंग, ही इज टेकिंग, ये सब तो एक्टिव में हो गया. टेकिंग तो हम ऑलरेडी बोल रहे हैं ना. टेकन. आई एम टेकन तो वो, हाँ तो नहीं, वो सिंपल प्रेजेंट था. जो ऊपर में वी डिड टेक और टेक्स का. आई टेक, शी टेक्स, ही टेक्स. आई एम टेकन, शी इज टेकन, ही इज टेकन, और दे आर टेकन. ठीक है. ये सिंपल प्रेजेंट में हुआ. आई एम आस्किंग सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यू, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा ये? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा ये? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, is being taken. So back to this place. कीवर्ड ऑफ एक्टिव वॉइस क्या हो गया हमारा? कीवर्ड ऑफ एक्टिव वॉइस बीइंग. ओके. समझ आ रहा है अभी तक? इज इट क्लियर? कीवर्ड ऑफ एक्टिव वॉइस इज बीइंग. कीवर्ड ऑफ पैसिव वॉइस इज by. Okay. So when I'm talking about present continuous, I am taking, I am being taken, I am being taken. Okay. Now I'll give a passive and I want the answer in active. जो भी word है. I can be taken. ये passive में है. What will be the answer in active? First of all, can anybody tell me the tense of the sentence? Why future? Will तो यूज नहीं हो रहा है. Will और shall तो यूज नहीं हो रहा है. So why will it be future? You try, शगुन. आप बहुत चुप बैठी है बहुत देर से. Give it a try. आपको समझ आया ना इतना तक का कॉन्सेप्ट?
यस, सिंपल प्रेजेंट में टेकन टेक्स है, और सिंपल प्रेजेंट पैसिव में है एम टेकन इज टेकन। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक ये वाले सेंटेंस में होगा? आई कैन बी टेकन। आई गिव यू अ हिंट, refer it to the passive voice of simple present. Taken है ना वहां पर? Yes. How do we write taken in active voice? Take or takes? I am, अगर I होगा तो take होगा, she और he होगा तो takes होगा. Yes. So now try to convert it in active. इसी sentence को I can be taken. What do you think it will be? Why I can be take? ये क्यों लिखेंगे? Be taken या am taken, is taken, ये सब किस में यूज हो रहा है? पैसिव में। सो एक्टिव में क्या होगा ये? बी टेकन, तो इट्स ऑलरेडी बीइंग यूज्ड इन पैसिव। बीइंग टेकन, बी टेकन, या एम टेकन, इज टेकन, ये सब तो ऑलरेडी इट्स बीइंग यूज्ड। यस, पैसिव में। सो व्हाट विल इट बी इन एक्टिव? बी को आपको रिमूव करना है। आई एम गिविंग अ सेकंड हिंट, बी को आपको रिमूव करना है। ओके, आई कैन टेक। यस, आई कैन टेक। I can take, I can be taken. Your understanding, be remove हो गया यहाँ से, और taken को हम लोग back to convert to take. मैंने क्यों आपको बोला कि आप simple present, active और passive में differentiate कीजिए? Because in simple present we are saying take, and in simple present passive we are saying am taken, is taken. तो e के साथ एक n add हो जा रहा है, isn't it? So that's why I can take. Is it clear now? Now there are questions, मैं एक एक करके सबसे पूछूंगी, so that everybody feels equal, सबको एक एक चांस मिलेगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर, किसके साथ जाऊं मैं पहले? आपने तो आंसर दिया दो करेक्ट, सो ओके, यू आर इन द सेफ जोन। आपको, शिवांश को, नॉट एट ऑल। आपने दिया है, आई फॉरगॉट योर नेम, वन सेकेंड। देविका, यस देविका। सो देविका हैज ऑल्सो गिवन, सो यू थ्री। ठीक है, शिवांश के साथ पहले जाते हैं। ऑल टाइम लेडीज फर्स्ट होते हैं, मैं इस बार जेंट्स फर्स्ट कर रही हूँ, क्योंकि एक ही जेंट्स है पूरे क्लास में। ओके, द सेंटेंस इज इन, किस में दूं मैं, ये सोच रही हूँ। विच वॉइस डू यू वांट इट इन, एक्टिव और पैसिव? Everyone can write down this sentence, but the answer will be given by Shivansh. Some of the cargo had been destroyed
or damaged by the seawater? First of all, what is the tense of the sentence? Acha, what is the voice of the sentence? Active or passive? Passive. Good. So, voice is passive. What is the tense? Just past. हाँ हाँ. Why past continuous? यहाँ पे ing आपको कहाँ पर दिख रहा है? You see an ing and you understand that it's a continuous tense, isn't it? Ing is the example of a continuous sentence. Yes? Past perfect. पास्ट परफेक्ट परफेक्ट टेंस का ना एक एग्जाम्पल ऑलवेज आप लोग याद रखिएगा. कीवर्ड्स हैव, हैज और हैड. कोई भी वर्ड के आगे वो लग जाएगा. हैज बीन, हैड बीन, हैव बीन. ये व्हेन यू आर सीइंग, understand that it's already in a perfect tense, be it a present or a past or a future. Okay, so this sentence is in past perfect. अब answer loudly. Why the cargo sirf? The sea water damaged the cargo. Yes, it's correct. But why sirf cargo? Sentence क्या है? Exactly. So ये silly mistakes नहीं करना है. The sea water damaged the cargo. Why? Sentence में some of दिया हुआ है. Okay. These are some silly mistakes जो बहुत students करते हैं. Is incomplete answers. What happened is your answer was correct. If this is a 1 mark question, your answer was correct. But I'll give you only a half. Why? Because the sentence was incomplete. So whenever you're writing an answer, make sure that all the elements of sentence are included in the answer of the question. Okay. So the sea water damaged some of the cargo. Okay. Clear है? Next question is for Sachi. आंसर सब लिख रहे हैं ना क्वेश्चन के बाद? यस. इवन इफ द क्वेश्चन इज नॉट फॉर यू, डू राइट इट. ओके. व्हाट्स द वॉइस ऑफ द सेंटेंस? A stone struck me on the head. What's the voice? Good, active, yes. And what's the tense? Easy है, come on. Yes. Simple past. So, हाँ. शगुन, you have exam? Okay, I think आपके घर से कॉल है. You can go. शगुन बच गई.
You enjoyed the class? Okay. Okay, so the tense is simple past, correct. अब आंसर बताइए इसका. My head was struck, and do you think there can be an alternative? Yes, it was correct, लेकिन construction गलत हो रहा है. नहीं, on why my head sentence में क्या है? The head. Did I say my head? Question में तो my head है नहीं, the head है. A stone struck me on the head. सब्जेक्ट प्रेडिकेट इसमें यूज होता है. एग्जैक्टली, आई वाज स्ट्रक ऑन द हेड बाय अ स्टोन. क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है हम लोग को यहाँ पे? आई वाज स्ट्रक ऑन द हेड. प्रेडिकेट क्या है? बाय अ स्टोन. इजंट इट? आप अगर सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन में सब्जेक्ट प्रेडिकेट सब्जेक्ट ऐसे है, या प्रेडिकेट सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, इज द सेंटेंस राइट? नहीं. Sentence starts with a subject and ends with a predicate. Yes, I was struck on the head. क्या हुआ? सर पे लगा. कैसे लगा? स्टोन से लगा. ओके, आस्क योर सेल्फ दीज क्वेश्चंस. आप जब खुद से पूछेंगे ना, देन यूल अंडरस्टैंड. सर पे लगा, मेरे को सर पे लगा. कैसे लगा? हम लोग घर पे जाके बोलेंगे मम्मी मेरे को पैर में लग गया. ठीक है, मम्मी पैर में पहले पूछेगी कैसे लगा पैर में. फिर हम लोग बताते ना कि कैसे लगा. हाँ, मैं खेलते खेलते गिर गई. Isn't it? So the sentence is like that. A stone struck me on the head. ठीक है? So I was struck on the head by a stone. Okay? Sachi, did you understand? आपका आंसर was correct. It wasn't passive. But थोड़ा सा construction और चाहिए था उसमें. And your sentence was also right, but the construction was wrong. Okay? Next. Um, this one. Devika, you'll go. I'm giving you a passive sentence. पहले मैं आंसर बता दे रही हूँ. It's a passive. Admission was refused to them by us. Voice we already know is passive. Passive. So tense क्या है sentence का? Again, what did I say? Simple past. Yes. Now answer.
why we had refused. एक सेंटेंस में हाउ मच पास्ट सब्जेक्ट्स और पास्ट वर्ड्स डू कैन वी यूज? किसी को पता है ये चीज? इन अ सेंटेंस वी डू टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, ओके? अगर एक सेंटेंस में देर आर टू नेगेटिव, दैट मीन्स टू वर्ड्स रिलेटेड टू द पास्ट, देन इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस, ओके? And if there is only one past word, then it's a positive sentence, okay? So admission was refused to them by us. सिंपल पास्ट है, सिंपल प्रेजेंट में रखना है। आई एम सॉरी, सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट में ही रखना है। वी रिफ्यूज्ड, आगे उसके बाद वाई टू देम। से मैं दी तो यूज ही नहीं की सेंटेंस में। वी रिफ्यूज्ड, yes, we refused them, simple past hai, we have to keep it in simple past. If I say we had refused, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। but the sentence is this thing, simple past में admission was refused to them by us, we refused them admission, sorry. When you're doing in active, आपका की चीज मैंने आपको क्या कहा? एक्टिव मीन्स टू द पॉइंट. Try to add as less words as possible, but the sentence has to be correct. ठीक है? Elements सारा है, but it's still an active voice. Okay? Last, this thing, खुशी, खुशी ना, खुशी. Yes. आपको मैंने इसलिए आंसर देने नहीं दिया because you've already given 3 to 4 right answers. So you're clear with the topic. I wanted to give others also a chance, okay? Hmm. What's the voice of the sentence? Passive, very good. What's the tense? Was taken. Remember to the keywords? Simple, of course. Simple? Yes. Okay. Now the answer. His friends took him to the hospital. Yes, correct. But एक चीज I'll correct in this sentence. Wait. Sorry. This. नहीं. Your sentence is right. I mean, your answer is right. Simple past. Now, why are you adding had? Again, you're converting it into past perfect though. Simple past, you keep it in simple past. Do not change the tense. Whenever you're getting a tricky sentence or any sentence जिसमें आपको लग रहा है कि what are the words that I can add or exclude, passive है तो add और active है तो exclude, always try to convert that sentence. If the question is given in passive,
Imagine how will you write the sentence in passive. Like जैसे कि he was taken to the hospital by his friends. अगर आपको ये question नहीं पता है, and just remember if you have the answer, his friends took him to the hospital. Okay? His friends took him to the hospital. आप इसको passive में कैसे बोलेंगे? He was taken to the hospital. Simple past, simple past. Yes? ट्राई टू कन्वर्ट दैट सेंटेंस बाय योर सेल्फ. जब आपके अंडरस्टैंडिंग में वो बैठेगा ना, देन यू विल राइट द करेक्ट आंसर. एंड वॉट रॉन्ग वॉज इन दिस सेंटेंस इज द pronunciation. खुशी, always remember only in front of the vowels. What are the vowels? Vowels क्या क्या होता है? Yes, A, E, I, O, U. इनके सामने ही सिर्फ दी प्रोनाउंस होता है, दी. ओके, द प्रोनाउंसिएशन इज दी. ओनली इन फ्रंट ऑफ वावल्स, ऑलवेज रिमेंबर दिस. जो कॉन्सोनेंट वर्ड्स है अदर देन ए ई आई ओ यू, द रिमेनिंग लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. यस, जो कॉन्सोनेंट है सिर्फ उनके सामने यूल से द, लाइक द सन, द मून, but the earth. Why? Because there is an e, and e is a vowel. Okay? And an किसके सामने लगता है? an किसके सामने लगता है? Vowels के सामने. Okay? So an and the, remember they are always put in front of vowels. Okay? So यहां तक सबका क्लियर है? कोई डाउट है किसी को भी एक्टिव पैसिव में और? So shall I give some sentences for homework? I'll write down the questions here. आप लोग कॉपी डाउन कर लीजिए इसको. It will be a mix, okay, of active and passive. Shagun, you're clear? Sachi, you're clear? Yes, and Shivansh, clear है एकदम? होमवर्क करना घर जाके. मम्मा कंप्लेन करी थी होमवर्क का लेकर. कंप्लेन नहीं करना चाहिए. अगर मेरे पास होमवर्क आया इनकम्प्लीट, दिस इज माई रूल. 15 times each sentence in front of me. यहीं बैठ के कंप्लीट करना होगा. ओके? होमवर्क ऑलवेज कंप्लीट होना चाहिए. ऑलवेज नहीं. um, a thunderstorm often turns milk sour.
In writing clearly, you cannot pump the ocean dry. The teacher was pleased with the boy's remarks. Okay, and not a word was spoken by Latif. Okay, लिख लिया सबने? Shall I change? Okay, one may achieve many things by a little effort. They painted the house red. He keeps me waiting. We saw you and him. Whatever the tense and the voice of the sentence is, you have to convert the voice, change the voice, but not the tense. Okay? And one thing that I want to do is एक ऐसे टॉपिक देना है. You all want to write? नहीं, नहीं, नहीं लिखना. सच्ची नहीं लिखना. 3 times से लिखोगे बाद में फिर. Okay, who doesn't want to write an essay? No, seriously, I won't give a punishment. अगर बाकी लोग करके ला रहे हैं, if you're not doing, then you'll get a punishment. अगर सबने वोट कर दिया नहीं नहीं करना है, then okay, no punishment. किसको नहीं करना है? इट्स ओके, आई वोंट पनिश. ये नेक्स्ट क्लास के लिए हो जाएगा. बोलो, सबको करना है कि नहीं करना है? यस और नो? तुम्हारा माइनॉरिटी एकदम वोट. क्या करोगे फिर? ट्राई करो. आई वांट टू सी व्हाई आई एम गिविंग यू होमवर्क इज लाइक ऐसे होमवर्क बिकॉज आई वांट टू सी द कंस्ट्रक्शन, your grammar, your construction, and the sentence that you're using in the sentence. Okay. That's sorry, the tenses that you're using in a sentence. Okay. See, यहाँ पे it's given. How do you write an essay? Introduction, body, description. Body में ही you describe. Body में भी always remember there is an intro. थोड़ा सा intro you have to give body में भी. Then you proceed to the description. Okay. Then your point of view. What is your point of view? And last में there is a conclusion. And conclusion means advice or what is important. You say that. Okay.
एक बहुत इजी सा ऐसे है, बट इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ थिंकिंग. इट इन्वॉल्व्स योर पॉइंट ऑफ व्यू. आंसर इट, घर से कॉल. या आंसर इट ऑफ कोर्स. आई कट इट शॉर्ट. 300 वर्ड्स. क्लास 8 में मैक्सिमम कितना लिखना होता है? 350, 400 at least, right? So I'm cutting it down to 300 words. Okay? Growing up. It involves a lot of thinking, your point of view, your experience. सब चीज ये involve करता है and you think what you can write in it. Now I'll just give a few points that is इस sentence इस topic में you'll describe your experience growing up as a gender first. ठीक है, एज अ चाइल्ड यू कैन राइट डेफिनेटली, लेकिन एज अ जेंडर व्हेन यू ग्रो अप क्या क्या एक्सपीरियंस आपको हुआ, एज इन सिंस यू ग्रोन अप एज अ फीमेल और यू ग्रोन अप एज अ मेल, तो व्हाट वर योर एक्सपीरियंसेस, सम गुड एक्सपीरियंस, सम बैड एक्सपीरियंस. ठीक है, एंड एंड में इन द कंक्लूजन यू टॉक अबाउट व्हाट यू थिंक कैन बी चेंज्ड, or what you think that can be changed that will make you feel good as a female or as a male. Okay? बहुत डिबेटेबल टॉपिक नहीं करना है इसको, जस्ट सिंपल ये रखना है. डिड यू राइट डाउन द टॉपिक? ठीक है. वेट आई विल गिव इट टू यू. वेट. टॉपिक Sachi, topic is very simple. You just have to write down your experience growing up as a child and then growing up as a teenager as a female. Okay, what were your experiences, what were good experiences, good bad experiences, and conclusion will be what do you think that can be changed that will make you feel good as a female or as a teenager. ठीक है, एकदम से डिबेटेबल टॉपिक मत बता देना कि एज टीनेजर्स ये रूल्स अप्लाई होता है हमारे ऊपर, ये सब गलत है. वैसे टीनेजर्स मत बन जाना, बट थिंक व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट कैन बी चेंज्ड. ओके, इतना ही क्लास में आज मैं करवा रही हूँ. इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास एंड जस्ट टेल मी हाउ डिड यू लाइक द क्लास टुडे. अच्छा लगा? एवरीबडी कम ऑन, ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए मेरे को. सी आई एम ऑल्सो अ कॉलेज स्टूडेंट राइट. मैं भी कहीं ना कहीं से एक स्टूडेंट ही हूँ. सो आई एज अ टीचर आई वॉन्ट टू बी एक ऐसा टीचर ना जो मतलब स्टूडेंट्स को पसंद आए. बिकॉज एज अ स्टूडेंट आई ऑल्सो से कि यार ये टीचर पसंद नहीं आ रहा है, टू जजमेंटल, टू स्ट्रिक्ट. वी डू दैट, वी हैव डन दैट, आई बी ऑनेस्ट, मैंने भी बहुत किया है. सो आई एम अ स्टूडेंट फ्रेंडली टीचर. ठीक है, दिस इज नॉट माई फर्स्ट कोचिंग, नॉट माई फर्स्ट टीचिंग. आई टीच अ लॉट ऑफ क्लासेस एंड आई ऑल्सो टीच म्यूजिक. सो बहुत चीज़ों में आई एम टीचिंग. सो दिस इज नॉट माई फर्स्ट क्लास, बट मैं सबसे अपने सारे स्टूडेंट्स से आई टेक एन ऑनेस्ट ओपिनियन. इफ देर इज समथिंग जो कि मेरे स्टूडेंट्स दे फील लाइक नहीं मैम आपको चेंज करना चाहिए, आई डू चेंज इट. बिकॉज आई वॉन्ट टू बी वेरी फ्रेंडली विथ माई स्टूडेंट्स. मेरे स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट हो यू आस्क मी. आई एम नॉट लाइक वो टीचर्स जो बोलते हैं 10 बार पूछ रहे हो बेटा कुछ नहीं बोलेंगे और फिर दूसरी बार पूछने पे ही झाड़ पड़ता है. आई एम नॉट लाइक दैट. यू आस्क मी 10 times आई आंसर यू 10 times बिकॉज बच्चों को कंफ्यूजन होता है. आई गेट दैट. ओके, सो एनी डाउट यू हैव यू आस्क मी, आई ऑलवेज क्लियर इट. और कोई भी दिक्कत हो कि मैम मेरे को ऐसे ठीक नहीं लग रहा है या ऐसे समझ नहीं आ रहा है वैसे समझ नहीं आ रहा है, यू टेल मी, आई एक्सप्लेन इट टू यू इन योर वे. ओके, बट डोंट कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है बाद में हो जाएगा हो जाएगा. डोंट पुश इट बाद के लिए. अभी हो रहा है अभी क्लियर कर लो. ओके. ओके, सी यू. बाय बाय. थैंक यू फॉर कमिंग.